নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই কন্দৰ্প গগৈ এমুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। অৱশেষত দীৰ্ঘদিন চলি থকা কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিৰ যি আন্দোলন সেই আন্দোলনৰ সমাপ্তিৰ কথা ঘোষণা কৰিছে CJPৰ প্ৰতিনিধিৰ ফালৰ পৰা। চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনাত বহিছে জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু JP নাড্ডাৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনাত বহিছিলে। যন্তৰ মন্ত্ৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি। যন্তৰ মন্ত্ৰৰ যি প্ৰতিবাদ সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাইছিলে আৰু সেই দাবীৰ পাছতেই দীৰ্ঘদিনৰ পাছত প্ৰায় ৩৬ দিনৰ পাছত ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে আজি কিছু সময়ৰ পূৰ্বে পদত্যাগ কৰিলে। পদত্যাগ পত্ৰ লিখি ২ পৃষ্ঠাজোৰা পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে। ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ পিছতে আনন্দ উল্লাস CJPৰ সমৰ্থকসকলৰ মাজত আৰু CJPৰ সমৰ্থকসকলে আনন্দ উল্লাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু CJPৰ প্ৰতিনিধিয়ে চৰকাৰৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ল আৰু চৰকাৰক তেওঁলোকে ৩টা চৰ্ত বান্ধি দিছিলে। সেই ৩টা চৰ্ত ইতিমধ্যে মানিছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু তাৰ পিছতে তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে যে তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিবাদ আছিলে সেই প্ৰতিবাদ সমাপ্ত ইমানতে অন্ত পৰিছে। অৱশ্যে জনাইছো কি আছে ৩টা চৰ্ত কেন্দ্ৰ চৰকাৰে মানি লৈছে ইতিমধ্যে CJPয়ে দিয়া সকলো চৰ্ত। কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিৰ সকলো চৰ্ত মানি লৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ৩টাকৈ চৰ্ত মানি দিছিল কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা আৰু সেই প্ৰতিবাদৰ পাছতে তেওঁলোকে অন্ত পৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। প্ৰতিবাদ মুখ্য চৰ্ত আছিল ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ পাছত 2টা চৰ্ত। প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ বাবে জীৱন হেৰুওৱা ছাত্ৰৰ পৰিয়ালক চৰকাৰে দিব ক্ষতিপূৰণ আৰু প্ৰতিখন ৰাজ্যতে প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা গোচৰ তেওঁলোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব। 3টা চৰ্ত বান্ধি দিছিলে। প্ৰথম চৰ্ত আছিলে মুখ্য তেওঁলোকৰ চৰ্ত আছিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে নিজৰ ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ কৰিব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰিছে আৰু তাৰ পাছতেই তেওঁলোকৰ আছিলে চৰ্ত আছিলে প্ৰতিখন ৰাজ্যতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে যি গোচৰ তৰা হৈছিলে সেই গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিয়ে দিয়া সেই চৰ্ত মানি লৈছে। আৰু তৃতীয়টো চৰ্ত আছিলে যে প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ বাবে জীৱন হেৰুওৱা ছাত্ৰৰ পৰিয়ালক চৰকাৰে ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব আৰু প্ৰতিখন ৰাজ্যতে প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব আৰু সেই চৰ্ত ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মানি লোৱা হৈছে। কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ আন্দোলন আৰু বৈঠকৰ পাছতে কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিৰ CJPৰ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আৰু ঐতিহাসিক যি আন্দোলন আছিলে আন্দোলনৰ সামৰণিকতা ঘোষণা কৰিছে আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মানি লৈছে শিক্ষাৰ্থী যুৱ শক্তিৰ চৰ্ত মানি লৈছে। CJPৰ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ পাছতে তেওঁলোকৰ আন চৰ্ত আছিলে মুখ্য চৰ্ত আছিলে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ আৰু তাৰ পিছতে আন 2টা চৰ্ত আছিলে প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ বাবে জীৱন হেৰুওৱা ছাত্ৰৰ পৰিয়ালক চৰকাৰে ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব। প্ৰতিখন ৰাজ্যতে প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব। যিহেতু গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছিলে কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিৰ মুখপাত্ৰ সৌৰভ দাস আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মুখপাত্ৰ আশুতোষ ৰাংকা আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবী কৰিছিল দীৰ্ঘদিনৰ পৰা। সেই তেওঁলোকৰ দাবীৰ পাছতে আজি পদত্যাগ কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে। JP নাড্ডা আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছিলে কেইবামিনিটো ধৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছিলে। বৈঠকৰ পাছতে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে যে কক্ৰজ জনতা পাৰ্টিৰ যি বৈঠক এই বৈঠকৰ পাছতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ যি ঐতিহাসিক যি আন্দোলন আছিলে তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি চলা যি আন্দোলন আছিলে সেই আন্দোলনৰ অন্ত পৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু কনষ্টিটিউশ্যন ক্লাবৰ বৈঠকৰ পাছতে এই সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছে কিয়নো চৰকাৰে সকলোবিলাক চৰ্ত মানি লৈছে শিক্ষাৰ্থী আৰু যুৱ শক্তিৰ চৰ্ত মানি লৈছে ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। The Cochroj Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. हमने 3 राउंड डिस्कशन सरकार की डेलीगेशन के साथ हमारे हुए हैं। सैकड़ों दिनों से जो हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था उस प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगें थी। रमेश प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं उन FIR को उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ के अभी ना लिए जाए
और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपने को खो दिया। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, इसका मतलब हमारी पहली मांग जो इस पूरी प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, इसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे FIRs जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में वो FIRs विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो FIRs फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 FIRs दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे FIRs की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगे। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं किया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ एंड CJP की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है। जो गारंटी है रिटन में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये FIRs के बारे में और एनी फ्यूचर एक्शन के बारे में वो हमें मिल जाएगी। हमने 3 राउंड डिस्कशन सरकार की डेलीगेशन के साथ हमारे हुए हैं। सैकड़ों दिनों से जो हमारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन की 3 मुख्य मांगे थी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो भी लीगल केसेस प्रोटेस्टर्स पे ऑर्गेनाइजर्स पे फाइल किए गए हैं, उन FIRs को, उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और कोई भी फ्यूचर केसेस प्रोटेस्टर्स या ऑर्गेनाइजर्स के साथ लॉ के अधीन ना लिए जाए। और तीसरी डिमांड हमारी थी 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन उन परिवारों के लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपने को खो दिया। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, इसका मतलब हमारी पहली मांग जो इस पूरी प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। साथ साथ जो हम लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे FIRs जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में वो FIRs विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो FIRs फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 FIRs दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे FIRs की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगे। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं किया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ एंड
सीजेपी की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है, जो गारंटी है रिटन में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। हमें आशा है कि ट्यूसडे तक जो गारंटी है सरकार के तरफ से इन राइटिंग ये एफआईआर के बारे में और इन एनी फ्यूचर